हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर up to 13 over. Okay, homogeneous differential equation y by x or x by y type method. Okay, चलो तो let's start with the number 14. हाँ, initial condition and this is a sum equation, differentially homogeneous differential equation. तो here completely arrangement is given, y by x ready. तो taking y by x equal to v directly, no arrange. Now taking y by x equal to v, so y equal to vx. Now dy by dx, so dy by dx equal to v plus x dv by dx. Putting all data in our equation. Therefore, dy by dx means v plus x dv by dx minus y by x equal to putting v plus cosec v and equal to 0. Okay? V cancel. So x dv by dx plus cosec v and equal to 0. Now taking cosec v other side. So x dv by dx equal to minus cosec v. Now this one is simple. V term and x term. So cosec v downside. So 1 upon cosec v dv minus 1 by x dx upon x, dx other side, cosec downside, dv as it is. Now 1 upon cosec means sine, so sine v dv minus 1 by x dx. Now we know that the integration of sine is minus cos, तो पहले से माइनस यहां पर रख देते हैं. ठीक है, here no minus. Now taking integration both the sides. Minus integration sin v dv integration 1 by x dx. Sin is minus cos, so minus minus plus cos v equal to log x plus c. Now putting initial condition in our equation. Initial condition is x equal to 1 and y equal to 0. Putting x equal to 1 and y equal to 0 in equation 1. Therefore, एक मिस्टेक जो हमने यहां पर की है. We can put the value of x and y after putting the value of v. First we have to put the value of v, y by x. Then we can put x equal to and y equal to, right? Now we are putting the value of v first. So cos and v means y by x equal to log x plus c. And this is our equation number 1. Okay. So now putting x equal to 1 and y equal to 0 in equation number 1. x1 y0, so cos 0 log x is 1 and plus c. Cos 0 is 1,
log 1 is 0 and plus c. It means c equal to 1. Okay. Now, putting the value of c in equation number 1. Therefore, cos y by x equal to log x plus c, and c is 1. Hello, this is our answer. Or cos y by x equal to log x. Now, can we put 1 equal to log e? Log e is 1. So 1 equal to log e. Cos y by x equal to log ex. Ex. Now removing log, then other term e raised to. E raised to y by x equal to ex. E taking other side. So e raised to y by x upon e equal to x. Our base same. So subtraction of power. E raised to y by x minus 1 equal to x. Okay. And also we can write, taking both the side log, so this term y by x minus 1 equal to log x. ये भी possible है. Are you ready? एक mistake. Sorry. Simple and silly mistake. E raised to y by x नहीं, e raised to cos y by x. Equal to ex. Now e raised to cos y by x upon e equal to x. So e raised to cos y by x minus 1 and equal to x. मेरी मिस्टेक थी, ठीक है. चलो नाउ दिस इज राइट. तो ये भी आंसर पॉसिबल है. बस अगर एमसीक्यू है, चलो एमसीक्यू इन दी थियरी एनी मेथड एनी आंसर्स आर पॉसिबल. अरेंजमेंट सही होना चाहिए. बट एमसीक्यू तो आपको परफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि ए बी सी डी. अगर चलो आपने वहां तक किया है, ये ऑप्शन में है तो ठीक है, ओवर. अगर नहीं है तो ये होगा, ये भी हो सकता है. डन. चलो तो दिस इज योर नंबर 40. ये माइंड में रखना कि 1 इक्वल टू वी कैन पुट लोगी. बराबर. हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट नंबर 15. y equal to 2, x equal to 1, x equal to 1 and y equal to 2. And this is the equation, okay? 2xy plus y square minus 2x square divided by dx and equal to 0. तो क्या करेंगे? With the divide by dx there is a 2x square. तो subject the divide and dx. तो जो with the divide by dx only term is 2x square. So if we take this term other side and upon 2x square, so this term and upon 2x square, so we can arrange y by x or x by y. So taking 2x square divided by dx other side, it means 2xy plus y square equal to 2x square divided by dx. So dy by dx equal to 2xy plus y square upon 2x square dy by dx. और करो सेपरेट. 2 cut, 1 time x cut, y by x plus y square by x square and downside 2
It means 1 by 2 and y square by x square, so y by x whole square. Done? Now taking y by x equal to v, so y equal to vx dy by dx equal to v plus x dv by dx. Now putting all data in our term, here putting dy by dx, so dy by dx equal to v plus x dv by dx equal to v plus 1 by 2 and v square, means v square by 2. Now here v cancel, so x dv by dx equal to v square by 2. X dv by dx equal to v square by 2. Now v square downside and x downside, separation over, and now 2 also taking other side. It means 2 by v square. 2 below 1 by 2 is a fraction. Now over here, if we take these 2 upside, so 2 is a integer. So 2 by v square dv, 1 by x dx. Separation is over. Now taking integration both the sides. Therefore, 2 outside, integration 1 by v square dv. Integration 1 by x dx. How to find the integration of 1 by v square? So first one, v taking upside, and this is 1 by x possible. Therefore 2 v raised to minus 1 upon minus 1 equal to log x plus c. So minus 2 by v. Okay, minus 2 upon v equal to log x plus c. Putting the value of v, what is v? Y by x. So minus 2 y upon x equal to log x plus c. Now putting x equal to 1 and y equal to 2 in equation number 1. Putting x equal to 1 and y equal to 2 in equation number 1. So minus 2, x is 1, y is 2 equal to log 1 and plus c. Ready? 2 to cancel and minus 1. Log 1 is 0 plus c. It means c equal to minus 1. Now putting the value of c in equation number 1. Putting the value of c in equation number 1. Therefore, minus 2x by y equal to log x minus 1. Now we can put here otherwise, taking one other side. So 1 minus 2x by y, right, equal to log x. Y LCM, y minus 2x upon y equal to log x. Now removing log, other term e raised to. Done. So e raised to y minus 2x upon y equal to x. Chalo, this is our final answer. Or you can write, you can put here log e. तो सब्ट्रैक्शन ये अदर साइड इन सेम प्रोसेस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, चलो तो दिस इज योर नंबर 15 विच इज ओवर.
Next, number 16 and number 17. Number 16. A homogeneous differential equation of the form dy by dx equal to h x by y. dy by dx ki dx by dy? Check karo to. Check in your textbook. There is a dy by dx or dx by dy. Dx by dy. My mistake. Dx by dy here. Can be solved by dash. So dx by dy and x by y, तो obviously x by y equal to v. So x equal to vy. X equal to vy. Option number C. X equal to vy. X equal to vy. Done? So this is your number 16 MCQ. Now number 17. Which of the following is a homogeneous out of these four options? And carefully check all the options and then decide which one is homogeneous. चलो number 1 A. चलो मैंने आपको क्या बोला था? Bracket type sums तो any method possible होगा. तो चलो taking this term other side. So this one becomes positive. Then dy upon dx, so this bracket downside. तो 3y plus 2x plus 4 अपॉन 4x plus 6y plus 5. चलो अगर हम यहाँ पर डिवाइड बाय x और डिवाइड बाय y करें, दो तीन समय ऐसे है कि ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट, तो डिवाइड बाय x और डिवाइड बाय y, बराबर. तो यहाँ पर क्या होगा? चलो डिवाइड बाय x, तो 3y बाय x प्लस 2x कट एंड प्लस 4 बाय x. 4 बाय x सिंगल x, बस मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि आपके जो जितने भी टर्म्स है कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट y बाय x और x बाय y नहीं होने चाहिए. सेम हियर डिवाइड बाय x, तो x कैंसल, y बाय x एंड 5 बाय x. 5 बाय x सिंगल x होगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको. तो दिस इज नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन. बी, चलो सिंगल x y एंड x क्यूब प्लस y क्यूब, तो डेफिनेटली दिस टर्म अदर साइड एंड देन अपॉन x y, राइट. तो x क्यूब अपॉन x y, तो ओनली वन टाइम x कट, कुछ भी एड नहीं हुआ. x स्क्वायर अपॉन y एंड सेम y क्यूब अपॉन x y, तो y क्यूब अपॉन x y, तो वन टाइम y कट y स्क्वायर अपॉन x. वहां पर भी कोई एड नहीं हुआ. y बाय x नहीं मिल रहा है, तो b इज नॉट होमोजेनियस. c x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर एंड हियर 2xy, तो डेफिनेटली अरेंज कैसे करेंगे कि ब्रैकेट अपॉन 2xy मिले ऐसे. तो इफ वी हियर टेक 2xy मींस फर्स्ट टेकिंग 2xy dy अदर साइड एंड देन 2xy डाउन साइड, तो x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 2xy, तो यहां पर x क्यूब अपॉन 2xy, तो वन टाइम x कैंसल, x स्क्वायर अपॉन y, नॉट होमोजेनियस. एंड डी ऑप्शन. तो अभी तो एबीसी नहीं है तो डी होगा. चलो डी यहां पर लिखते हैं. व्हाट इज डी? y स्क्वायर dx. ऑप्शन डी, y स्क्वायर dx प्लस ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर dy एंड इक्वल टू 0. तो क्या करेंगे? डेफिनेटली अरेंज ब्रैकेट अपॉन y स्क्वायर में मिले ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है. चलो तो टेकिंग दिस ब्रैकेट अदर साइड, y स्क्वायर dx इक्वल टू, चलो टेकिंग दिस ब्रैकेट अदर साइड, तो साइन चेंज करो, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव एंड एक्स स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव dy. नाउ अपॉन वाई स्क्वायर, तो dx बाय dy, और अपॉन वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर, वन टाइम वाई कट एंड एक्स बाय वाई, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 and x square upon y square, so x by y whole square. So this is a homogeneous differential equation. सिंगल टाइम x नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, सिंगल x सिंगल y ये नहीं होना चाहिए. ABC तीनों में वही हो रहा है. ओके, तो ABC are not homogeneous, but option number D is a homogeneous equation. Both they are very easy MCQs. So here our 9.5 exercise is over. 9.5 homogeneous over. Now 9.5 related examples. तो 9.4 related examples up to 14 over.
And 9.5 related example starting with the number 15. But number 15 is lengthy sum. यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो taking the number 16 first and then 15 लेंगे बराबर हालो तो taking the example number 16 x cos y by x dy by dx equal to y cos y by x plus x तो dy by dx y by x and this is the product तो taking down side तो dy by dx सब जगह हो जाएगा आपका हालो तो dy by dx equal to y cos y by x plus x upon x cos y by x. Ready? Upon x cos y by x. Hello, करो separate. y cos y by x upon x cos y by x तो cos y by x cancel and y by x plus x upon x cos y by x तो x cancel 1 upon cos y by x already y by x no single x no single y तो taking y by x equal to v so y equal to vx dy by dx equal to v plus x dv by dx. Done? Are putting all data in our term. So here putting dy by dx which is v plus x dv by dx. V plus x dv by dx equal to v plus 1 upon cos v. Now v cancel. So x dv by dx equal to 1 upon cos v. How simple? Cos v upside dv equal to 1 by x dx. Cos v dv 1 by x dx. Ready? Taking integration both the sides. So integration cos v dv and integration 1 by x dx. Integration of cos sine 1 by x is log x. In your textbook, here putting c, but we can put only c. Yeah, textbook में क्या log c. Yeah, we are putting here c, but in the textbook, in this sum, they put c here. Like they put log c here, and then combine कर दिया. हमें वही रखना है. चलो putting the value of v. What is v? Y by x. तो sin y by x equal to log x plus c. Ready? चलो तो this is our example 16. एक 15 बाकी है जो हम next part में लेंगे. Okay, MCQs perfectly understood. This one is easy. and यहाँ पर आपको 1 by 1 ऑप्शन करना है. and single time x और single time y वो नहीं रहना चाहिए. अगर वो है तो होमोजेनियस नहीं है. हमने ये डी सोल्व किया तो वहां पर जो इजीली हमें x by y और y by x जो भी मिले. ओके रेडी. एंड एग्जांपल 16 इज और सिंपल होमोजेनियस सम. डन. हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट 16 एग्जांपल example number 16 over. Next taking the number 15. x minus y dy by dx equal to x plus 2y. So dy by dx equal to taking this bracket other side. So dy by dx equal to x plus 2y upon x minus y. Now dy by dx. So making here y by x. So divide by x. Divide by x.
here divide by x, तो 1 plus 2y by x, 1 minus y by x. Okay, now this is our homogeneous equation. Now taking y by x equal to v, taking y by x equal to v, so y equal to vx, dy by dx equal to v plus x dv by dx. Putting all data in our term. Now therefore dy by dx equal to v plus x, dv by dx equal to 1 plus 2v upon 1 minus v. Now all v combined, so taking this v other side. Okay, so v other side, so x dv by dx one plus 2v upon 1 minus v and minus v. Therefore x dv by dx, taking LCM, 1 minus v here multiply, so 1 plus 2v minus v plus v square, minus minus plus and v square upon 1 minus v. Okay, so x dv by dx equal to v square 2v minus v plus 1 and 1 minus v. Now tell me one thing, 1 minus v is right or v minus 1? V minus 1. So here minus sign common and v minus 1, and minus keep as it is right side. V minus 1 upside, v square plus v plus 1 downside and dv. So v side all v ready, and x downside, so 1 by x dx and minus as it is. V minus 1 upon v square plus v plus 1 dv minus 1 by x dx. Are ready? Now taking integration both the sides. Integration v minus 1 upon v square plus v plus 1 dv minus integration 1 by x dx. Now how to find this integration? So this is your integration sum, or 3 or 4 mark sum. V minus 1 upon v square plus v plus 1 downside equation and upside v minus 1 downside equation upside x minus 1, तो function and derivation v square derivation v and v derivation 1. ओके, चलो तो जो एक काम करो, अगर हम यहाँ पर वो वाली मेथड अप्लाई करें, आपको पता है कि 2 पार्ट होंगे, 1 पार्ट फंक्शन एंड डेरिवेशन, अदर पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, I1 I2 एंड लेंथी सम. ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको नई मेथड बताता हूँ. अभी तो आपको पता है, आपने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन ओवर, एंड मेथड यू नो वेरी वेल. Exact derivation, what is the exact derivation of denominator? 2v plus 1. तो arrange 2v plus 1 upside. Arrange 2v plus 1 upside. तो we need here 2v plus 1. तो first we need 2v, but we have only v. तो multiply and divide by 2 तो हो जाएगा 2v. ओके, तो multiply and divide by 2, but हम डिवाइड नहीं करेंगे. आपको पता है कि if we divide 2 तो 1 by 2 is a fraction. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाई 2, लाइक मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाई 2, तो 2v माइनस 2 अपॉन
v square plus v plus 1 dv, and 2 here also multiply, and 1 by x dx. Easy. Now our derivation is 2v plus 1. So 2v ready. Now we need plus 1. So 2v plus 1, but we have minus 2. So plus 1 and minus 3. And denominator separate, v square plus v plus 1. dv minus 2 integration 1 by x dx. Now separate the integration. First integration 2v plus 1 upon v square plus v plus 1 dv minus 3 outside and 1 upon v square plus v plus 1 dv minus 2 integration 1 by x dx. चलो नाउ ये तो कंप्लीट है. हम क्या करते थे, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डेरिवेशन, v स्क्वायर इज 2v and v इज 1, तो टेकिंग दिस टर्म इक्वल टू t. बराबर. तो जो सम इज लेंथी, तो आपको रफ में करना है, ये रफ में इतना सोल्व करना है. तो टेकिंग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt. इट मीन्स 2v प्लस 1 dv इक्वल टू dt मीन्स 1 and dt अपॉन t, 1 by t log mod t and log mod v square plus v plus 1. तो this side answer is log mod v square plus v plus 1. हेलो, this integration is over and minus 3. चलो यहां पर हम क्या करते थे, 1 अपॉन एन इक्वेशन तो परफेक्ट स्क्वायर. बराबर. तो हियर परफेक्ट स्क्वायर कंटिन्यू 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v, तो लास्ट टर्म क्या हो गया हमारी 1 by 4, तो प्लस 1 by 4 माइनस 1 by 4 एंड प्लस 1 dv इक्वल टू minus 2 integration 1 by x dx. Are you ready? Now this one is, आज एक काम करो, इंटीग्रेशन तो हमें साथ में करना है, डायरेक्ट नहीं. हमने कैलकुलेशन तो कर लिया, बट डायरेक्ट हमें यूज नहीं करना है. ठीक है, वी कैन नॉट यूज. तो अभी आपका जो इंटीग्रेशन वैसे ही रखो, दिस इंटीग्रेशन स्टेप सेम. आंसर तो आपको पता है. अगेन दिस इंटीग्रेशन सेम, 2v plus 1 upon v square plus v plus 1 and dv minus 3 इंटीग्रेशन 1 upon, चलो यहां पर क्या करेंगे, v plus 1 by 2 होल स्क्वायर, v plus 1 by 2 whole square. Now last constant term calculation, तो 4 LCM 4 minus 1 3 by 4 plus 3 by 4 dv minus 2 integration 1 by x dx. तो ये आंसर तुम्हें पता है, log mod डिनोमिनेटर, log mod v square plus v प्लस 1 माइनस 3. चलो ये भी हम रफ में करेंगे. जहां पर आप सपोज करोगे ना वो रफ में करो. लाइक इन दिस टेकिंग टी, तो हमने रफ में कर लिया कि दिस टर्म टी, तो 2v plus 1 dv इक्वल टू dt, 1 by t इज a log mod t and t is v square plus v plus 1 dv. चलो सेम हमें ये रफ में करना है. तो v plus 1 by 2 इक्वल टू टेकिंग t, बराबर.
तो v डेरिवेशन 1 and dv equal to 1 dt. तो 1 dv equal to 1 dt, 1 dt, and this term is t, तो t square plus 3 by 4. What about t square plus 3 by 4? x square plus a square formula 1 upon x square plus a square 1 by a tan inverse x by a. तो 1 by a tan inverse t by a, and t means v plus 1 by 2. बस इतना याद रखो. Then what? Now 1 by a, what is a? Root 3 by 2. 1 by a, तो this 3 as it is by a. What is a? Root 3 by 2 upside. Tan inverse x by a. X means t. So t by a. What is t? V plus 1 by 2. V plus 1 by 2 by a means root 3 by 2 equal to minus 2. 1 by x is log x and plus log c. Okay? Chalo, so one step and then put the value of v. V square plus v plus 1. 3 by root 3, root 3. So minus 2 root 3. Tan inverse. 2 LCM and cut. So 2v plus 1 by root 3. Equal to log minus 2 log x and plus log c. So first make the power. So it is minus log x square, right? Log c minus log x square. Log c by x square. Log c by x square. Ready? And now putting the value of v. So what is v? In this sum v is a y by x. Otherwise एक काम कर लेते हैं. Taking this term other side and log combine. So log v square plus v plus 1 minus log c by x square equal to 2 root 3 tan inverse 2v plus 1 by root 3. Log n subtraction, so division. V square plus v plus 1 upon c by x square equal to 2 root 3 tan inverse 2v plus 1 by root 3. चलो लास्ट स्टेप आपको करना है. पुट द वैल्यू ऑफ v ओनली y by x एंड सम ओवर. टेक्स्ट बुक आंसर नहीं मिलेगा. टेक्स्ट बुक में क्या किया है उन लोगों ने? log c नहीं लिया है, ओनली c लिया है. अगर आपको वैसे करना है तो आप यहां पर c लो, देन ओवर. चलो, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 15. ओके.